समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम अंतर्गत भावनगर खाते विविध विकास कामोना लोकार्पण और खातमुहूर्त प्रसंगे अपनी सौनी साथे मंच पर उपस्थित नवा भारतना स्वप्नद्रष्टा जेमणे पहला गुजरात ने नवी दिशा आपी अने हवे जो भारत ने समृद्धि और संपन्नतानी नवी स्थिति तरफ लई जई रह्या छे एवा विश्व नेता और यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदी साहेब, केंद्रीय मंत्री श्री CR पाटिल जी, श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, डॉक्टर मनसुखभाई मांडविया जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री शांतनुजी ठाकुर जी, श्रीमती नीमूबेन बाबणिया, मारा साथी मंत्री श्री कनुभाई देसाई, ऋषिकेशभाई पटेल, राघवजीभाई पटेल, कुंवरजीभाई बावड़िया, श्रीमती भानुबेन बाबरिया, श्री परसोत्तमभाई सोलंकी, मारा सौ साथी धारासभ्य श्री, मेयर श्री, जिला पंचायतना प्रमुख श्री, उपस्थित सर्वे पदाधिकारी, आमंत्रित सर्वे महानुभावों, प्रेस मीडिया मित्रों, सौने मारा नमस्कार। आज एक ज दिवस में एक साथे 33,600 करोड़ रूपियाथी वधुना प्रजा कल्याण विकास कामों आपने आपवा आदरणीय मोदी साहेब पधार्या छे। तेमनु प्रजा वत्सल्य राजवी महाराजा कृष्णकुमार सिंहजीना आ भावेण नगर में स्वागत करूँ छूँ। गुजरात देश में सौथी लांबो 1600 किलोमीटरनो समुद्र किनारो धरावतुं राज्य है। द्विभाषी मुंबई राज्य थी 1960 में गुजरात अलग राज्य बन्यु त्यारे सौना मन में एक मोटी शंका हती कि गुजरात पासे कोई संसाधनों के रिसोर्स तो है नहीं, मात्र रण, दरियो और डूंगरनी ज कुदरती संपत्ति धरावतुं आ राज्य शू विकास करूँ एने सौने लागतुं हतुं। लोकोनी आ शंकाओ दायकाओ सुधी मोटा भागे साची पण पड़ी। जो विकास माटे आगवी सूझ धरावतुं नेतृत्व मळे तो कोई राज्य देशना विकासनो रोल मॉडल बनी सके ए बात गुजराते 2001 थी मोदी साहेबनी विजनरी लीडरशीप में पुरवार करी छे। समय साथे कदम मिलावीने विकासनी गति अपनावी तेमनी कुनेथी विकास में दरिया किनाराओनो सदुपयोग थवानी शरूआत थई। 21મી सदी में बदलायेला वैश्विक परिमाणों, आधुनिक व्यापारनी तको तेमज अद्यतन टेक्नोलॉजीनो समन्वय दरियाई संस्कृति साथे करवानुं विजन आदरणीय मोदी नरेन्द्रभाई मोदी साहेबे आप्युं छे। तेमनुं विजन एवुं स्पष्ट हतुं के गुजरात स्ट्रेटेजिकली लोकेशननो महत्व लाभ लईने बंदरोनी नजीकमां ज विविध उद्योगों स्थापवा, नवा उद्योगोने उत्पादन अने मार्केट संबंधित आयात निकासनी विविध जरूरियातों माटे कैप्टिव सुविधाओं आपवी तेमज महत्तम खानगी रोकाणनी मददथी राज्यना औद्योगिक अने बंदरीय माळखानो विकास करवो। आ बधा सफल प्रयासोथी राज्यनी बंदरीय तकोनी सदुपयोग थयो अने पोर्ट लेड डेवलपमेंटनी दिशा खुली। आ पोर्ट लेड डेवलपमेंटना पायामां मोदी साहेबे आपेली अभिनव पोर्ट पॉलिसी, कैप्टिव पॉलिसी, शिप बिल्डिंग पॉलिसी जेवी महत्वनी पॉलिसीज रहेली छे। आना परिणामे आज गुजरात देशना लगभग 39% कार्गोनु हेन्डलिंग करे छे। देश में सौथी लांबा दरिया किनारा धरावता अपना गुजरात में दरियाई सुरक्षा सुदृढ़ करवानी साथे शिप बिल्डिंग, शिप रिसाइकलिंगनो वडाप्रधानश्रीनो विचार पण तेमना दिशादर्शन में साकार थयो छे। गुजरात में बंदर आधारित उद्योग और उद्योग आधारित बंदर बे कॉन्सेप्टनो संगम वडाप्रधानश्रीनी दिग्दर्शिती थयो छे। सौ प्रथम LNG टर्मिनल तथा कंटेनर टर्मिनल कार्यरत थया छे। PM गतिशक्ति थी बंदरों ने पूरक रोड, रेल, लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी मળી છે। श्री मोदी साहेबे मत्स्यपालकोना हित में पण अनेक पगला भर्या छे। वडाप्रधान श्री हमेशा पर्यावरणना रक्षण साथे संतुलित विकासनी नेम साथे चाले छे। तेमणे बिन परंपरागत स्रोतथी ऊर्जा, सोलर, विंड, हाइब्रिड एनर्जीना उपयोगने प्राधान्य आप्युं छे। चारणका सोलर पार्कथी तेमना दिशादर्शનમાં થયેલી સૌર ऊर्जा क्रांति आज कच्छ में 30 गीगावॉटना सौथी मोटा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क सुधी विस्तरी है। देशनी कुल रिन्यूएबल एनर्जीना 60% थी वधु
એટલે કે 39.27 ગીગાવોટ એનર્જી એકલું ગુજરાત આપે છે। પવન ઉર્જા અને રૂફટોપ સોલરમાં દેશમાં ગુજરાત પહેલા નંબરે છે। ખેડૂતોને ઉર્જા સુરક્ષા સાથે ગ્રીન એનર્જી પીએમ કુસુમ યોજના 2 લાખ કૃષિ વીજ ગ્રાહકોને આવરી લેવાયા છે। પીએમ સૂર્ય ઘર મફત બિજલી યોજના તો લાખો પરિવાર માટે આર્થિક બચતનું માધ્યમ બની છે। વડાપ્રધાનશ્રીની પ્રેરણા અને માર્ગદર્શનમાં રણોત્સવને કારણે વિશ્વભરમાં ખ્યાતિ મેળવેલા ધોરડો ગામમાં આજે તેમના જ હસ્તે 100% રહેણાંક હેતુના વીજ જોડાણનું સોલરાઇઝેશન થવાનું છે। સફેદ રણની વિશ્વ ખ્યાતિ સાથે હવે ધોરડો 100% પીએમ સૂર્યઘર ધરાવતા ગામનું પણ ગૌરવ મેળવશે। વડાપ્રધાનશ્રીએ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટની સાથે નવા અને વિકસિત ભારત 2047નો સંકલ્પ કર્યો છે। આજે ગુજરાત અને દેશ અન્ય રાજ્યોને મળેલા વીજળી પાણી રોડ રસ્તા સહિતના માળખાકીય વિકાસ કામોથી લોકોનું ઇઝ ઓફ લિવિંગ વધશે અને આ વિકાસ કામો નવા ભારતના નિર્માણમાં દિશાસૂચક બનશે। તેમણે આત્મનિર્ભર ભારત માટે પણ દેશવાસીઓને આહ્વાન કર્યું છે। આત્મનિર્ભર ભારત માટે સ્વદેશી દેશમાં બનેલી ચીજ વસ્તુઓના ઉપયોગથી આપણે સૌ વોકલ ફોર લોકલને વેગ આપીને તે સમયની માંગ છે। 2 દિવસ પછી મા જગદંબાની આરાધનનું પર્વ નવરાત્રિ અને તે પછી દિવાળીના તહેવારો આવશે। આપણે સૌ આ દિવાળી સ્વદેશી દિવાળીનો સંકલ્પ કરીને દેશમાં જ બનેલી વસ્તુઓ ઉત્પાદનો સાધન સામગ્રી ખરીદીને સ્વદેશીને પ્રોત્સાહન આપીશું તેવો મને વિશ્વાસ છે। ફરી એકવાર ગુજરાત સરકારના વિવિધ વિભાગોના 2524 કરોડ અને કેન્દ્ર સરકારના વિભાગોના મળીને 33,000 કરોડથી વધુ વિકાસ કામોના ભેટ દ્વારા સમુદ્ર સે સમૃદ્ધિના નવા અધ્યાયની શરૂઆત કરવા બદલ આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપીને વિરમું છું। ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત।